जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम भाई, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। क्या खूब किया है जो किया है। थैंक यू सो मच। पहले आप सबको गुड़ी पड़वा की बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और नवरात्रों की भी। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक एज एन एक्टर बहुत मैं तो छटपटाता हूँ, मुझे कोई ऐसा किरदार दे जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग काम करने को मिले, उसके डीप अंदर जाने को मिले। तो थैंक्स टू तुषार कि उन्होंने मुझे सोचा श्रीकांत का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। एज एन एक्टर दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लुक फॉर, कि जितना चैलेंजिंग, जितना घुस कर काम कर पाएं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। Absolutely, and as a cine lover, every time we get to know कि राजकुमार राव की फिल्म आ रही है, टी सीरीज की फिल्म है, so we get really excited। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। थैंक यू। हमने एक यूनिट देखा था जहां पे वो BTS जैसा है, जहां पे आप श्रीकांत साहब के साथ वो जुगलबंदी चल रही है आप दोनों की। मैं चाहूंगा आप प्लीज डू द ऑनर्स एंड इनवाइट द जेंटलमैन ऑन स्टेज। I love you too, guys. Thank you. Thank you. Shrikant. श्रीकांत The बोला, real ladies and gentlemen. Shrikant Bola. Give it up for him, ladies and gentlemen. जिन्होंने इंस्पायर किया है इस पूरी कहानी को और ऑफ कोर्स इस पूरी फिल्म को। The man himself. Shrikant sir, congratulations. Wow, I have no words to say, but I congratulate the entire cast crew, Bhushan Kumarji, Tushar, and one and all who has worked on this film, especially Brother Raj, because ever since the motion poster was out, I have been receiving numerous calls and messages from friends and say, both of you look better, and I ask them, who look better? So most of the people tell me, and I take liberty to say, Tushar's father says I look better. I agree. I totally agree here. But it is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge. And Tushar and team has done a phenomenal job. You see, this is an emotional moment for me because I have to remember late Shri Gulshan Kumarji. And you might be wondering whether I'm gone mad watching a trailer, of course, but I'm not drunk, by the way, yeah? Because I anyway don't drink. Because it is his pet product, which is T-Series audio cassette, through which I have studied my education, heard those cassettes zillion times, all the way from my class 5 and class 10 and class 12. All the way from class 5 to class 12, I lived and did what you say, what do you do with your wife, Kapram, in Telugu. I lived like a live-in relationship with those audio cassettes, and today those cassettes are the only things among whole lot of other stuff which got me onto the stage. And today, what better has to come? The T-Series production powerhouse has come to make this film. What a connection and what an emotion. And as a person, I don't need more than this. From all the way from a T-Series cassette to T-Series launching my film is a great honor for me for this generation. But I have a bigger responsibility ahead to protect for the next 35 years, because getting a biopic shot at the age of 30, 35 and living with that glory and achieve more growth for the next 35 years is a big challenge in front of me as a real hero, and I would love to protect that, uphold all your respects, and thank you so much, one and all. Hope this film becomes a big success, especially as an actor. This will bring laurels for Raj. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Thank you so much. Truly remarkable is what I'd like to say here. And of course, talking about remarkable, this gentleman, ladies and gentlemen, इनकी एक performance देखने के बाद सब यही कहते हैं, truly remarkable. Give it up for Sharat Kelkar sahab, ladies and gentlemen. Woo! Now welcome. First things first, before we talk about anything else, that chemistry that we're seeing on that screen, you and Raj bhai, talk to us about that. Like, क्या हो रहा है वो? सर्वात पहिले सर्वांना गुढी पाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर.
हैप्पी नवरात्रि. When तुषार narrated me the film, जब कहानी सुनाई मुझे और जब इनके किस्से सुनाए पहले तो मुझे कहानी से ज़्यादा किस्से बहुत इम्पोर्टेंट थे. जो एक्चुअल रवि जो बैठे हैं वहाँ पर और श्री के साथ जो किस्से थे, वो जो एक केमिस्ट्री सुनाई सिर्फ मुझे, वो इतनी इंटरेस्टिंग है. पहली चीज़, जब भी हम कोई ऐसी फिल्म करते हैं तो बहुत इमोशनल होगी, बहुत बेचारा टाइप फील होगा, बहुत ऐसा सैड स्ट्रक्चर होगा फिल्म का. ऐसा कुछ नहीं था. तुषार ने बोला ऐसा कुछ नहीं है फिल्म के अंदर. बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़े करोगे आप लोग. एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद राज. और हम सब पसंद करते हैं राज को, इसके काम को. और दोस्ती करना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी फिल्म करने से पहले. सो वी बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन वी एक्टेड इन द फिल्म. तो वो कहीं ना कहीं वो एक केमिस्ट्री दिखती है. और जब इतना लिबर्टी देते डायरेक्टर हमको काम करने की कि जो करना है करो, तो हम वही कर रहे थे जो मैं लग रहा था बैठ के. बट थैंक यू तुषार फॉर द फिल्म. थैंक यू भूषण जी. एक और मौका आपके साथ काम करने का. लगातार करते ही आ रहे हैं और टचवुड सारी फिल्में बहुत अच्छी गई हैं अभी तक. और ये फिल्म भी मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for sharing that. And now, ladies and gentlemen, of course, the Kaptan Saab of this ship, जो कि रॉक करने वाला है. एंड इतना ही कहूँगा, इस फिल्म से पहले भी फिल्में डायरेक्ट की हैं, शोज डायरेक्ट किए हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स जो हैं उनको लिखा है तुषार हीरानंदानी साहब, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, ladies and gentlemen, with an amazing fan following here. क्या कहना चाहेंगे सर? द रिस्पॉन्स, जो हमने यहाँ पे देखा, एंड इट्स अ फुल हाउस. वी आर ऑल सरप्राइज्ड, एवरीबॉडी इज हियर टू सपोर्ट दिस फिल्म. एक्चुअली फुल हाउस से भी ज़्यादा है. ये एक्चुअली होना चाहिए हमारे फर्स्ट शो टिल लास्ट शो जब चलते रहे. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बट या मैं 4 साल पहले जब मैंने पहली पिक्चर बनाई थी, तब मेरी प्रोड्यूसर निधि, जो इस पिक्चर में भी प्रोड्यूसर है, शी कुड नॉट अटेंडेड बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट विद माई सन इज हियर. और अभी 4 साल बाद नेक्स्ट पिक्चर में ऑलरेडी इधर खड़ा है ये. तो या इट टुक मी 4 years टू मेक दिस फिल्म. ऑब्वियसली कोविड वाज देयर, बट आई हैड ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम भूषण जी. Because it's not a typical kind of film that you make. It's a very risky film. It is people, you need a producer to understand it, and he and Shivji really understood it from day one, and they really supported me and Nidhi while making this film. And obviously when Raj sir came in, and then we just took off from there. Then Sharad bhai, everyone just came on, like even Jyotika, Alaya. No one asked me anything. When I should just go and tell them the story of this man, they just instantly took ahead and said, we'll do the film. So it was great. We really had great fun. Shooting भी बहुत मज़े से किया. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. स्पेशली माई टीम, बहुत ही अच्छी टीम थी मेरी. मेरा राइटर्स सुमित, जगदीप, मेरा कैमरामैन प्रथम, बहुत से लोग, मेरा एडिटर संजय, बहुत लोगों ने हेल्प किया. बहुत 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 मज़ा आया मुझे पिक्चर में. तुषार सर, एक थोड़ा सीरियस सवाल, ये श्रीकांत सर के बारे में उन्होंने बताया, बिकॉज हमने यहाँ देखा बहुत उन्होंने, वो नॉटी भी हैं थोड़े, तो उन्होंने बोला था ये नहीं दिखाना है, ये दिखाना है. ऐसा कुछ बताया था आपको? आपको पता है, मैं इस आदमी के पीछे सबसे पहली पिक्चर मुझे श्रीकांत बनाना था. बट ही डिडंट मीट मी ओनली फॉर 2 years. मैंने उसको बोला मैं एनडीटीवी से इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं इस चैनल से, बीबीसी से इंटरव्यू करना, मिला ही नहीं. फिर सांड की आग रिलीज हुआ तो उसने बुलाया कि चलो मिल लेता हूँ. फिर वहाँ पे नहीं, उधर पहुँचने के बाद मुझे बोला कि मैंने ये राइट्स ऑलरेडी किसको दे चुका हूँ. मैं हैदराबाद पहुँचने के बाद, फिर उसके बाद बैठा, ही मेड मी श्योर कि कैसा है ये वो, देन ही गिव मी द राइट्स. अभी बोल. He actually snatched rights from me. I didn't give him. So this man is so perseverant, and more than me actually. He's so resilient enough that he piche pada. Then when he ultimately took the rights by force, and I am very lucky to have such a committed couple do this film along with Bhushan ji, because when I met him for the first time, he sounded so happy. Today I'm meeting him again. He is double joyful and happy. So thank you for doing this film, Bhushan sir. Hope this film gives you great success. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट. ये बहुत अंदर की बात पता लग गई हम लोगों को यहाँ पे. इसका नाम श्रीकांत भोला है, ये बिल्कुल भोला नहीं है, बिल्कुल नहीं. आई एम श्योर सर. But I'm naughty, of course.
See, I knew it, sir. That's why I asked that question. I knew it. मुझे दिख रहा है यहाँ पे. Okay, on that note, ladies and gentlemen, the person who's actually understood what filmmaking is all about, as in क्या क्या जाता है, कैसे कैसे वो creativity उसमें लगाई जाती है, and of course, the moolah, ladies and gentlemen, the biggest and the most loved film producer of our country. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. The man understands his audiences like none other. Bhushan sir, welcome. Ended 2023 on not just a high note, but the highest note. And here we are on this very, very special day, launching something as exceptional as Shrikant. क्या बोलना चाहेंगे, and what made you believe in this, sir? First of all, thank you very much for the response you all have given. And मैं अभी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो रहा हूँ बिकॉज जो श्रीकांत ने जो अभी पापा के बारे में बोला, कैसेट्स के बारे में बोला, सो आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड टच विद योर experience what you have done with the cassettes, which my father was very very attached to. Sir, just to add, those cassettes are the only books that I had in the form of cassettes, and that got me 98% in my first year of maths, physics and chemistry. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में. जब तुषार मेरे पास पहली बार ये स्क्रिप्ट लेके आया था तो एक लाइन सुनाई थी तो उसी में मैं बहुत हम अटैच हो गए थे. देन वी वर थिंकिंग कास्टिंग किसको करें, तो देन मैं तुषार ने ये बोला कि ये मेरे हिसाब से राजकुमार राव के अलावा कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर नहीं सकता. तो देन वी वेंट टू राज एंड राज ने आई थिंक पहली बार सुनते ही हाँ बोल दिया कि ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. Thank you for एंड thinking थैंक of यू me. श्रीकांत फॉर गिविंग अस द राइट्स टू प्रोड्यूस दिस फिल्म. No, it's my noble opportunity and pleasure, sir. एंड शरद, मुझे याद है मैंने आपको एक फ़ोन कॉल की थी कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए, आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था. थैंक यू निधि. शिव, आपने पूरा बहुत मेहनत करके ये फिल्म में बहुत मेहनत करी तुषार के साथ. एंड अबव ऑल यू तुषार, बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत अटैच हूँ फिल्म से क्योंकि जितने लोगों को भी मैंने ये अभी ट्रेलर लॉन्च से पहले दिखाया है, सब ने खड़े होकर तालियां मारी हैं. और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब वी प्रोड्यूस सो मेनी फिल्म्स बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस. तो आप सब भी ये फिल्म थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा. दिस इज़ माय रिक्वेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, sir. 10th May is when we'll get to watch this movie in theaters. And now to invite on stage the very gorgeous Nidhi Parmar, Hira Nandani, ladies and gentlemen, the producer sahiba of this movie. Come on, make some noise for her. And welcome. We can see the happiness in your eyes. अभी क्या बोलना चाहेंगी? तुषार भाई ने अपनी वो पूरी मेहनत के बारे में बता दिया, and of course इस मेहनत के बारे में भी बताया. Now if you have to sum up this entire journey, what do you have to say? Shrikant, each and everyone here in this audience is like हम already attached हो गए हैं इससे. What do you have to say? I mean, imagine in one promo, if you got attached to him, we spent so much time with him. He's just like a part of a family. And the best part about Shrikant is that I think he's more witty than all of us put together. He has us rolling on the floor whenever we sit with him. And having Raj play Shrikant has been, and I want to tell you all something about Raj. The minute he used to come on set and wear his lenses, he used to transform and he used to become Shrikant. Then koi break bhi hota tha, even if you're eating lunch, he would not remove his lenses. He would sit like Shrikant to the extent that I would not see Raj. I would only see Shrikant, and I would forget sometimes that Raj is playing Shrikant. Till the time he removed his lenses, he was Shrikant. He didn't become Raj at any. He was so honest to his performance. It was just it was a pleasure watching him perform. We had a fabulous team. Tushar, I think like Shri, the real Shri, put it very, very eloquently that he's. I don't think there's any person who's more persistent and resilient than Tushar. He gets what he wants. He goes after it. I mean, I married him. No, but it's been a beautiful, beautiful journey, and thank you, Bhushan ji. He's really been a backbone for us. He's supported us so beautifully, and I also want to shout out to Jyotika and Alaya, my two girls who I'm missing today. They are such an important part of this film. They bring the
soul and heart of this film, and they are missed today. And but they'll be with us soon, and it's just been incredible. We've met incredible people. It's become a family, and the journey has been long and hard. But we hope everybody enjoys the honesty and the love that we poured into it. Thank you so much, ma'am. Sir wants to add something. You see, except for Raj, every character that is visually impaired are all sitting here. Most of our actors are here. All the actors in the film are visually impaired except for Raj. So whoever are playing visually impaired, they all, in fact, all our stars are sitting here. Yeah, we had great fun working with them. Thank you everyone over here who has come. Thomas, everyone. Thank you so much. एक बार ये जितने सुपरस्टार्स, जैसा मैंने कहा था, बहुत स्पेशल मेहमान आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सब लोग. You know, they deserve each and every word of appreciation, all the love here. एक काम करते हैं, quickly we'll have a photo op with this team, and then we'll have a full photo op in some time. So it's over to you. Go, shoot. Also, we'll invite some very important people on stage. So we'll start with the co-producer on this film, जिनकी बात अभी की, of course, talent ने भी की, sir ने भी की, शिव चांदना साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen. Mr. Neeraj Kalyan is here, President T-Series. Neeraj sir, please आइए. Of course, Dr. APJ Abdul Kalam साहब की भूमिका में जमील खान साहब को हमने देखा, उनको भी यहाँ बुलाना चाहेंगे. Also, Mr. Neeraj Roy is here. Neeraj sir, please. जोरदार तालियां sir के लिए. Presenting this entire Kamal Ka team of Shrikant, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op. Ravi sir, please. This won't have been possible आपके बिना. Please आइए. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you so much. We'll take your questions now. Thank you, gentlemen. Thank you, Neeraj sir. Thank you. Okay, we'll take your questions now. तो कहाँ से शुरुआत करने वाले हम लोग? आपसे? जी. कोई बात नहीं. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. मेरा एक सवाल नहीं, मेरी एक गुजारिश है. उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. सबसे पहले तो श्रीकांत सर, यू आर माई हीरो. आपकी कहानी मैंने जब से पढ़ी थी पिछले 1-2 साल से, यू रियली टच्ड माई हार्ट. और आज आपके द्वारा मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, मेरे बाजू में बैठे हैं मिस्टर चार्ल्स. उनकी कहानी से भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, और मैंने उनको भी कहा था कि अच्छी फिल्म, एक फ़िल्म देखने के लिए लोगों को आंखें चाहिए, लेकिन एक अच्छे सिनेमा को समझने के लिए वो दिल से, उसके लिए आंखें नहीं, उसके लिए दिल चाहिए होता है. और आप सभी लोगों में मुझे देखता हूँ, चाहे श्रीकांत जी, राजकुमार, तुषार, आपके अंदर वो दिल है. और क्योंकि ऑब्वियसली इस इशू को मैं थोड़ा बहुत पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है. और जब भारत की बात आती है तो हमारा देश, यहाँ पे एक से एक बड़े डॉक्टर्स हैं. द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय, LV प्रसाद, बहुत सारे हैं. लेकिन जब डोनर्स की बात आती है तो उस मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत पुअर है. एंड अ कंट्री लाइक इंडिया हैज़ टू डिपेंड अपॉन एन आइलैंड नेशन लाइक श्रीलंका, जिसकी पॉपुलेशन केवल 2 करोड़ कुछ है. और तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, राजकुमार साहब से, श्रीकांत जी से भी, कि आप अगर एक अपील कर दे इस माध्यम द्वारा लोगों को, कि आप टू एनकरेज ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन इन दिस कंट्री. थैंक यू. No, for sure, sir. Before you said it, actually हम लोगों ने ये already हमने बात की है कि हम during our promotion हम इस बात को भरपूर कोशिश करेंगे कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि organ donation कितना important है. जैसे कि आपने कहा, आपने personally इस चीज़ को महसूस किया है. I'm sure there are millions out there जिन्होंने महसूस किया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाए. Yeah, I echo what Raj said, sir.
Hi, this is Nawaz Kochra from Indian Express. I have two questions. One is for Raj, you, and one is for Bhushan, sir. Sir, Bhushan, sir, I'll start with you. I want to know that, 2023, you gave us the biggest blockbuster with Animal. And now comes Shrikant, which is, a full of life story, so inspiring. I want to know what is it that pushes you every time to, bag stories which are so diverse, yet so, in the heart is in the right place. First of all, you like the trailer? Absolutely. See, we are a studio, means definitely as a studio, we want to, give our audience different kind of cinemas. And as I just told you when I just told about the film, कि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जब जिस टाइप की इमोशनल स्टोरीज लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए तो उसके लिए इसलिए हम हर टाइप की फिल्म बनाते हैं. हम कॉमेडी भी बनाते हैं, हम एनिमल हमने भी फिल्म बनाई, and we made Tanaji also. We are making Bhool Bhulaiya, we are making Raid, we are making so many films. But I think this kind of cinema is also very important. And वो लोगों को experience कराने के लिए उनको इसके आप अगर एक ब्लाइंड मैन की कहानी भी बता रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से entertaining बना सकते हैं और प्लस उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या challenges होते हैं, and they are also as strong as people who have eyes. तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से करना चाहिए. एंड हम एज टी सीरीज वी वांट टू डू दीज काइंड ऑफ मोर एंड मोर फिल्म्स इन फ्यूचर. Thank you so much. Raj, I have a question for you, Raj. So, 14th year in the industry for you, if I'm not wrong. And what I've seen is that Rajkumar Rao has never succumbed to the pressure of, being a celebrity when visibility is concerned, but he's rather, made his craft speak for himself. And with Shrikant also that is happening. I want to know that, the Raj who started off in 2010, what was his idea of entertaining the audience, and today what is the reason that, Raj picks up roles that are so performance heavy? I think the idea was same when I started out in 2010 with the Love, Sex or Dhoka with Diwakar Banerjee. The idea was same, that to just push myself as an actor and to do a variety of roles and not to put myself into a bracket. This is something that people should know me for. कि Raj सिर्फ यही करता है. I want to do everything. I don't want to never ever think कि ये शायद नहीं हो पाएगा. Whenever somebody says कि यार ये बहुत मुश्किल है, तू कर पाएगा, as Shrikant says in the film also कि मैं सब कर सकता हूँ. मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. And that's what I want to aim for. That's what I want to try. To push myself as an actor with every film whenever you get an opportunity. Of course, you do films which are like light-hearted, like Stree and Bareilly also. But whenever I get a chance to do films like Shrikant or Shahid or Trap, Newton, I love it. As an actor, drama will always be my favorite genre. But I love making people entertain as well. Giving them entertainment. Either entertain them or engage them in a conversation. So that's the two ways I see cinema is. Hi Rajkumar, Ravi from ABP News. राजकुमार, आपको आज के दौर का एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है, बेस्ट एक्टर माना जाता है आज के दौर के. मेरा सवाल ये था कि हिंदी सिनेमा में पहले भी कई लीड एक्टर्स ने इस तरह के ब्लाइंड शख्स के किरदार निभाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों में ब्लाइंडनेस को, जो नेत्रहीनता है, उसको प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या जो रियलिटी है उससे वो दूर होता है, वो किरदार फिक्शनल होता है. चूँकि ये किरदार रियल लाइफ शख्स पे बेस्ड था, तो आपने किस तरह की तैयारी की और किस तरह का प्रिकॉशन लिया कि ये ऊपरी तौर पे ऐसा ना लगे कि एक शख्स जो देख सकता है वो ब्लाइंड शख्स का किरदार निभा रहा है, और उसको जो रियलिटी का टच दिया जाता है, वो कैसे आपने उसको मैनेज किया जब आप ये किरदार निभा रहे थे? सर, यही मेरा प्रयास है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि वो ऐसा ना लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. उसके लिए मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. और जो मैंने एक चीज़ तुषार को भी फर्स्ट डे ये हमने जब बात करना शुरू की तो मैंने बोला था कि दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट श्रीकांत बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड. दैट्स समथिंग दैट इज़ देयर. इट्स अ स्टोरी. वी आर सीइंग एन एस्पिरेशनल स्टोरी. वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ये एक फैक्ट है. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Shrikant,
we were very normal. Like, you know, we were like talking, discussing. He's very witty, he's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well, but he was very open to the idea. उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी अपने खोल के रख दी सामने. And then as an actor, ये मेरी जॉब है कि मैं कितना उससे लूँ और उनको कितना ऑब्जर्व करूँ, कितना अपनी ज़िंदगी में उतारूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीकांत, मैं और तुषार बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल भी जाते थे. हम लोग यहाँ पे गोरेगांव SV रोड पे जोगेश्वरी में वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ जाते थे. वहाँ पे घंटों में बैठता था. बिकॉज माई थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रे रियलिटी ऑन स्क्रीन. कि मैं, जैसे कि निधि ने कहा, कि कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊँ तो मैं श्रीकांत हूँ. जब तक पैकअप ना हो मैं श्रीकांत ही रहूँ. वो हम एक लेंस पहनते थे आँख में छोटा सा कुछ. जैसे ही वो लगता था मैं श्रीकांत हो जाता था. फिर सेट पे कोई आता था नहीं आता था मुझे पता नहीं होता था. एक बार भूषण जी भी आए थे. But I think that's the only way I could do this part. Otherwise, you know, just to act like a visually impaired person on camera and then cut and then you're normal Raj hanging out chilling. That's not how I see, you know, my art is. My art is too spiritual. It's too meditative for me, and I love it immensely. Just to you know, corrupt it with any kind of cheat codes. Actually, I have to See, tell you just something. to 1 second, add- I'll tell you. 1 sec. Just to add something. तो जो पहला दिन जब शरद और ज्योतिका ने शूट किया इसके बाद पूना में, तो ये बिल्कुल उनसे बात नहीं किया. तो शरद और ज्योतिका दोनों मेरे पास आए, बोला ये बहुत ही अकड़ता है यार, ये एक्टर है क्या है, बात भी नहीं करता. तो आई सेड नहीं ये ऐसा ही है, रोल क्लिप. देन इन द इवनिंग व्हेन दे मेट देम, दे सेड हाँ ये ठीक है ठीक है. तुषार, आपसे भी एक सवाल था कि Just to finish up the previous question, because this is little important, I feel. So in this movie, the blindness is not shown, the vision is shown. See, many people often ask me. See, many people ask me, do you have any vision? Of course, I tell them I am full of vision. What do you mean? No, you don't see, no. So people doesn't mean vision is different and sight is different. People doesn't often get that difference. And I made it very clear to Tushar, and Tushar actually understood that concept, that vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore, the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. A man with challenging nature, without the privilege of eyesight, but with full of vision, can do wonders. That is the concept. श्रीकांत, आपसे भी एक सवाल था. जैसे कि आपने कहा मजाक में कि ज़बरदस्ती राइट्स ले लिए तुषार ने मुझसे मेरी फिल्म के. कोई ऐसा, जब आपको पता चला कि फिल्म बनाना चाह रहे हैं तुषार, तो कोई ऐसा प्रेफरेंस था कि भाई कौन मेरा किरदार निभाए? आपके मन में कुछ चल रहा था? आपसे यह सलाह ली गई थी इस बारे में कि कुछ इसका बस चले खुद ही कर लेता. I told him I'll play my role. But he was very afraid nobody would see in the theater, so he had hired a right actor, right cast. But Tushar was so passionate, Nidhi was so passionate, so determined that I don't need to even give them any ideas, because they themselves come up with ideas and tell, how is this looking like? I would have no words, because they have gone all out to make this film a big success. So they put in their heart and soul into it. So when you actually put heart and soul and work hard, there's nothing under the sun that you cannot reach or achieve. This is what is happening. राजकुमार Hi, जी, श्रीकांत. तकरीबन कितने लोगों को बेचकर खाने की तैयारी कर रहे हैं आप? पहले तो तुषार को तो करना पड़ेगा. राजकुमार जी, नहीं, मैं बेच के खाने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ किसी को भी. मैं बस खाने की तैयारी कर रहा हूँ. No. I If the person is so violent that selling them is not an option, we can even do it. Hi, Shrikant. ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं आप? लाइक अब तो आप एक्टर बन गए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम आपको लोगों ने बहुत परेशान किया था. नाउ अब आपने ऐसी तैयारी की कि अब नहीं, ऐसा इसको कुछ नहीं. मैं मैं बिल्कुल भी विंडिक्टिव नहीं हूँ. पर अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हाँ, तब ज़रूर, क्यों नहीं, तब मैं श्रीकांत बन जाता हूँ. जैसा इसका ग्रिट है, जैसा इसका परसिवरेंस है. But otherwise, no, I'm not vindictive at all. I think we all should be good human beings first, यार. उसके बाद ही I think सब कुछ, everything else matters later. I have a question for Shrikant and Rajkumar. Shrikant, I think in a very light note, it's your academic achievements are obviously known, but you're someone who understands sound.
so much better than the rest of the world. I want to understand, how did you look at Hindi cinema when you were listening to cassettes at the time and visualize? Today you are literally being on screen and you're being celebrated in the biggest industry. So tell us about that. Who were your actors and the songs that you like at that time? The next question will be for Raj. See, you can see until your eye can see, but I can see beyond. That is what makes the Fantastic. difference. Because that is what actually what makes us pay attention to minute things that are so important in life. Because if you don't have a privilege of eyesight, you have to pay extra attention in whether doing business, that too under very complicated environment in our country, or whether it's education, whether it's playing cricket. See, the ball, when it rolls on the ground, when the wind is so high, the ball sound is not even heard, is not even properly audible. Yet you need to pay attention on your ears to make sure how the ball is coming, be it a baseball or be it a cricket ball that I played. So it's always important to pay attention to detailing in life, whether for a normal individual or visually challenged individual. So things, because it's always challenge to pay detailing on multiple on small things. So that's exactly what I do, and that is what gives me good results. So I can even tell whether my machine bearing or a blade is right by hearing the noise of the machine. So that is the level of detailing that I give it to in the works that I do. So coming to movies, yes, I watch selective Hindi movies which carries big subject, which carries. So I have seen biopics like Gunjan Saxena. I have seen Parmanu and things like that. Some movies which Mission Majnu, which has a good subject again. So I am very particular in terms of watching movies. Telugu, I watch a lot of movies because movie and language goes together with me. I cannot resonate even though I speak flawless English, I don't watch English movies because that is not where I belong. The medium that I belong is Telugu, and that is where I take entertainment and I watch most movies. Fantastic. Thank you, sir. Raj, and of course, Tushar, I think, one thing I'll obviously, before I ask the question to Raj, Tushar has a knack for celebrating characters like heroes, that we call it. I love the fact that, there's a popular belief that you only have really big, massy heroes to be celebrated that way. What I see in the trailer is Raj is being celebrated that way. And the continuation question for Raj is that Raj, it is true that we only celebrate certain characters through the slow-mos, through the punchy dialogues and massy way, because we have a certain way of looking at things and trying to make them even more indie, which is not a bad thing. But what happens is also you get to entertain so much more when you tell stories in this manner. You've been, you've chosen very, very interesting roles, and you've done indie films as well. But at the core of your heart, you've always said, I am here and I love the classic hero and the films like that. I think this story is being celebrated that way, and it's probably the best thing that we see today, isn't it? Yeah, exactly. This is the kind of storytelling I totally believe in. Where you, where, as we were talking earlier, where you don't see being visually impaired as a problem, or see it from a sympathetic point of view. It's nothing. It's not a disability. It gives you more power, as Shrikant said. It makes you, it empowers you with other things. And what Shrikant has achieved in his life is something which most of us haven't achieved in life. So I think this is truly an inspirational and aspirational story, and I'm so glad that I'm a part of it. And it's been made by Tushar and produced by Bhushan sir, both prolific makers. We have seen in Insaan Ki Aankh how the kind of cinema he makes, and it's never preachy. It's very much for every audience member. It's not targeted towards a certain kind of an audience. It's meant for everyone. It's commercial. It's entertaining. And that's exactly what Shrikant is. That's why I love this story so much, because it tells you such a big thing with a lot of light-hearted moments. So when you ask me when I pick up stories, so the actually credit goes because Nidhi and my company is called Chalk and Cheese, and we are actually like chalk and cheese. That's why we call it Chalk and Cheese. We actually fight on everything, but except for when we talk about stories, this is what she does. She gets these ideas to me, and then we discuss, and that's what she makes it happen, that she gets the right subject, and that's how we get to make these films. Sharad sir. I'll come to you. Just a sec, ma'am.
I believe Bhushan sir has a professional commitment to attend to. So thank you so much, sir. Thank you, Bhushan sir. Thank you so शरद much. सर शरद Yeah, hi. सर Hi. रसिका शिंदे तरुण भारतमधून एक कलाकार म्हणून हा चित्रपट तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे आणि राजकुमार सर आपके लिए भी कि एज ए एक्टर एज ए कलाकार ये मूवी आपके लिए क्या मायने रखता है नाही, जसं की राजकुमार सरांनी सांगितलं की प्रत्येक कलाकाराला एक अशी एक हौस असते की त्यांनी वेगळे वेगळे रोल्स करावे. माझ्यासाठी पण ऑफलेट काय होतं ना की असं एक भारदस्त आवाज, एक भारदस्त एक कलाकार आहे असा. तर बऱ्याचदा असं होतं की लोक एकाच दिशेने त्याला बघतात की हा असेच रोल करणार किंवा हा असं भारदस्त रोल करणार किंवा असं खूप स्ट्रॉंग कॅरेक्टर करणार. म्हणून असे सिनेमे करतो जिथे लोकांना वाटेल की नाही हा बाकी काही पण करू शकतो. आणि एका कलाकारासाठी ते खूप इम्पॉर्टंट पण आहे, कारण तुम्ही काय करू शकता त्याच्यासाठी तुम्हाला चान्स मिळणं गरजेचं आहे. आणि जर असे चान्स मिळाले तर एक कलाकार दाखवू शकतो की तो काय काय करू शकतो. म्हणून असे सिनेमा म्हणजे करावे लागतात. आणि म्हणजे आम्हाला खूप आवडतं, कारण जे सेम वस्तू तुम्ही परत परत केली तर आपल्या आयुष्यात काय म्हणजे काही एक्साइटमेंट नसेल. लोकांना भलेही ते आवडेल, ॲज अन ॲक्टर मला नाही आवडणार ते की मी सेम गोष्ट रोज करतोय, सेम फिल्म्स करतोय किंवा सेम कॅरेक्टर्स करतोय. म्हणून ही फिल्म खूप इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी, लोकांना हे दाखवण्यासाठी की असेही रोल मी करू शकतो. Shrikant, Lipika Verma here. The trailer looks amazing. You have a huge vision. When I spoke to you during COVID, you and Rajkumar, when Rajkumar came to you to meet in Hyderabad, both of you had envisioned it to go to Oscars. No, nothing like it, ma'am. It has to do well. It has to do well, inspire people across the world. It should थिएटर में आ गया, बहुत बड़ी बात है मैडम, ऑस्कर छोड़ दो. It should just inspire people in every step, be it people of disabled parents or teachers who's teaching people with disabilities, or the coaches who's doing it, or in fact even the employers, even the policy makers and everyone. That's all what the film aims for, and rest of the things are just in air. Rajkumar, would you like to add something? Because you were the one who had told Shrikant that your performance will be, and we believe it. I never told him that my Never said performance would that. get me an Oscar. ये I'm not सब that kind of a guy, ma'am. ये सब श्रीकांत. श्रीकांत ही बोलता रहता है मुझे ऐसा सब होगा, पर इनके मुंह में घी शक्कर. Praise, that's all. It could have been an off-record praise or whatever. So nothing serious on aiming for Oscars or anything. Over here, Shubhajit over here. First of all, I believe सबने already ताली बजाया, but I think once again everybody should clap for Shrikant sir. I think जहाँ पे बहुत लोगों का vision खत्म होता है, वहाँ पे उनका शुरू होता है. And I'm totally amazed by the story कि जहाँ पे इंडिया के top universities ने उनको accept नहीं किया. One of the best in the world. They called him because of scholarship. My question is to you, Raj sir, कि जैसे कि सर ने भी हासिल किया success after getting a lot of rejections everywhere, right? In your life as well, you have also faced a lot of hurdles, rejections. उसके बाद जाके अपने, you know, the kind of success that you're dealing with today, you have got that after all those things. तो जब आप उनके साथ time spend कर रहे थे, and you were hearing all those stories as well, were you relating it with the kind of rejections that you had also faced, and how do you turned it into success in your life? No, absolutely. I think our journeys was pretty similar that way. Like he comes from a very humble background, and likewise I come from a very humble background. He didn't have too many means, you know, throughout his journey. Likewise, so I could totally relate to his journey. But only thing he had was grit. Only thing he had was a dream that he wanted to achieve this, no matter how, but he would achieve it. And that's exactly how you know my life was. Like I wanted to be a film actor one day. I had no other plan in my life. This is the only thing I always wanted to do, and just kept working the hardest till it happened. Has your self-motivation level gone up? Because he's actually turned impossible into possible. So has your own self-motivation level gone up after this movie? No, it's very tough to, you know, you always see problems with your work. So I'm very glad, I'm very happy that I'm a part of this film, that I got to play Shrikant. But there's much more. There's much more that I would love to achieve in life. There's much more
way more challenging characters I would love to portray on screen. Hi. At heart, Shrikant, of course, is celebrating his vision, his story. But at heart, I think Shrikant is also a story of acceptance, something that most people who are different from the crowd or in societal terms different look for, Sympathy and empathy are two emotions that might look similar, but they are actually very, very different. And I don't think that visually impaired people actually look for sympathy at all. When you're making a film or when you're acting in a film, how difficult does it become for you as a director, as an actor, to navigate between the two emotions so that people don't feel sympathetic and people feel more empathetic towards the character? See, for me, I'll tell you honestly, it's always when I hear a story or when a writer narrates a scene to me, I react bodily. I'll start crying or I start laughing. And there I realize what it is. So I never think what you are saying, empathy or sympathy. Yes, there are some times that you will sympathize with him. There will be sometimes, there are scenes like that, because that is, you can't run away from that. There are things like that. But the way he gets up and fights every time, that was the character that we knew that we wanted to make, that every time he falls down, he doesn't give up. Like his first thing he says, the kid says, which is Shrikant, the younger Shrikant, that I can't run because where will I run? I'm blind. They will catch me, so I have to fight. So that is the whole story. So that I always make films like this, so I'll continue to make films like this only. But I have fun. So it's also I don't want people to sympathize with them. I treat them like heroes. So that's what I feel that's the best way to do it. Thank you so much, sir, for sharing that. What about you, Raj? As an actor, exactly. I think what Tushar said. We never wanted to showcase his, his. Of course, there's a lot of vulnerable moments in the film, but we always wanted him to, come above those moments and be a winner, which he is in real life. So we were just portraying his life on screen, and his life, as we all have seen and have read, it's all about winning. It's all about, inspiring others. See, just to close it, I want to put it in a different perspective what Raj said about vulnerable. They are not vulnerable moments. See, in life, if you don't face hardship, you don't know the taste of it. In my life, I faced so much of hardship that it has become an addiction for me now. So there's no more hardship. It is just an addiction. I always say, if I face a challenge, say, bring it on. Let me work hard and universe be the witness to make me successful. That's all. Thank you so much. Thank you so much. And before we wrap up, ladies and gentlemen, we have these superstars. जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के बीच बहुत सारे superstars. मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं ताकि हम आपको देख पाएं और आपके लिए जोरदार तालियां बजा पाएं. Oh, come on, give them all a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. इतना बेहतरीन काम करने के लिए और उस बड़े पर्दे पे चार चांद लगाने के लिए. On stage, please. जमील खान साहब से अभी मिलवाया था मैंने आपको. Of course, Thomas, where are you? Yeah. जमील भाई, आप भी आइए. आइए. आप लोग सब ने जिसे अब्दुल कलाम सर को देखा, ये जमील सर ने प्ले किया अब्दुल कलाम. हेलो सर. बहुत टफ होता है जब ये लोग सीन में होते हैं. आजा प्रोड्यूसर आजा. बहुत डर लगता है. भूषण जी चले गए. आ जाओ. निधि मैम, प्लीज कम. आप प्लीज बसा. तुम्ही बसा अभी. खूप खूप धन्यवाद. बोलो क्या एक्टिंग किया तुमने पिक्चर में. So they are all acted in the film, all of them. So, thank you so much to Tushar sir, Rajkumar sir, and whole the entire team of She Movie, जिन्होंने हम सबको काम करने का मौका दिया और हम सबको एक चांस दिया कि हम भी एक्ट कर पाएँ. थोड़ा बहुत एक्टिंग का मुझे शौक है, तो मुझे अपना शौक पूरा करने का मौका मिला इस मूवी में. So, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए. मैंने अपनी पूरी फैमिली को कहा था कि ये मूवी में मतलब मैं हूँ थोड़ा बहुत और आने वाली मूवी मेरी. सो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है मूवी को. मतलब हमेशा पूछते रहते हैं वो लोग कि कब मूवी आने वाली है, कब आने वाली है. सो फाइनली मूवी का डेट रिलीज़ हो गया है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी को देखने के लिए और ट्रेलर देखने का मौका मिला. सो बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच टू एंटायर टीम.
ऑटोग्राफ आपका पहला मैं ही लेने वाला हूँ अभी, रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये सब लोग इतने नेचुरल एक्टर है ना, मैं हमेशा तुषार को ही बोलता था कि जब भी हम सीन में एक साथ होते थे, मैं बोलता था यू नो व्हाट तुषार, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी, बिकॉज यू नो आई how much ever I try, this is real, and I was always, of course, it's real, but that was a challenge, that's something which really pushed me ahead to work hard, the hardest, because इनके साथ acting करना, you can't cheat, then people will catch you like this, but it was fun, it was so, they are all brilliant actors here. Thank you so much. जी चार्ल्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छे बात भी करता है। चार्ल्स सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। आई जस्ट प्रे फॉर यू ऑल। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी है। जैसे श्रीकांत सर बता रहे थे उनकी स्टोरी जो उन्होंने कैसेट से शुरू की थी, फ्रैंकली स्पीकिंग आई कुड नॉट एजुकेट माई सेल्फ, दैट्स ओनली बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस विजुअली impaired sicknesses and all, but I like to thank T3 sir and the team which made these cassettes, and today NAB India who is working behind this by making audio notes and digital world, and today we are not disabled, we are able like you people. Yes. But I'll say God bless you all, but one more thing, मैं थोड़ा पहले देख सकता था, अभी बिल्कुल नहीं दिखता 2022 के बाद, बट मैं बैंड्रा चर्च जाता था माउंट मैरी एवरी टाइम। जब भी मैं चर्च जाता था तो वहाँ से एक शॉर्टकट वे है जो एक बहुत ही नामचीन घर की तरफ से गुजरता है, मन्नत। तो मेरी भी एक मन्नत थी ज़िंदगी में कि बाहर से तो बहुत देख लिया, उनकी वो बस भी देख ली, वो क्या कहते हैं उस बस को, वैनिटी वो भी देख ली, सिक्योरिटी गार्ड हाथ लगाने नहीं देता। तो बस एक ही दुआ है कि शाहरुख सर का घर अगर अंदर से देखने मिल जाए तो क्या बात है। और एक लास्ट चीज़ तुषार सर के लिए है। तुषार सर, आपने मुझे इमीडिएटली राज सर के पहले भेजकर उस क्रिकेट में मुझसे कहा है, अभी यहाँ पे आपसे सबसे कहा कि चार्ल्स इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ मुंबई, बट वहाँ पे मुझे पहले बॉल पे आउट होने के लिए कहा गया। फिक्स था सब कुछ, फिक्सिंग हो गई थी मैच में, बट आई लव विद देम एंड frankly speaking they were very down to earth with us all the time. God bless you all. I'll finish my words here. God bless. Thank you so much. Thank you so much. On that note, Tushar sir, quickly, I'd like to talk to Jamil sir. We loved that character. शुरुआत में जैसे आप आते हैं और जिस तरह से उस किरदार में ढल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने आप को इस किरदार में कभी देखा ही नहीं था। जब तुषार ने मुझे अप्रोच किया तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। मैंने कहा भाई, डू यू थिंक आई विल एक्चुअली बी एबल टू पुल इट ऑफ? एंड इट वाज हिज कन्विक्शन एंड आई वेंट विद इट। बट व्हाट आई वुड वांट टू से बेसिकली इज दैट कलाम का किरदार, एपीजे का किरदार जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही एस्पिरेशनल भी है, जिस तरीके के शख्स हैं वो, और श्रीकांत के साथ उसका कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में डबल वामी हो जाता है। तो एक ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, और आई एम थैंकफुल टू तुषार, टू राज, टू भूषण जी एंड टू द एंटायर टीम दैट दे थॉट मी केपेबल इनफ टू प्ले एपीजे, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ये किरदार करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये शेयर करने के लिए। 10 तारीख को देखेंगे। एंड तुषार सर, वन मोर टाइम हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दिस and so beautifully. बहुत बहुत धन्यवाद and शुक्रिया. It's the entire team. Absolutely. Every actor, every person who's worked on this film, the production team, everyone has given their lives and sweat to this, and thank you so much, everyone. All right, ladies and gentlemen, that's all we have for you. Shrikant in cinemas, 10th of May. That is Akshay Tritiya. We're gonna go there and watch this movie with this amazing team. Thank you so much. अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो आप लोग. Thank you. We'll do it with the team. एक टीम के साथ करेंगे देवांग में. हाँ? निधि मैम, please.
Thank you so much. We'll quickly do the solos, yeah? Ji. Good, we're good. Shrikant sir, wait. We'll do a quick picture with you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so awesome.